This fight can so easily be fight of the year. हमने इस साल इतने fight of the year contenders सोचे थे, right? We thought Dustin Poirier, Max Holloway 3 would be crazy. Khamzat Chimaev versus Dricus Du Plessis जो सबने सोचा था is gonna be fight of the year, dude. It's gonna be insane. But really, when you look at the entire past year, सारे जो pay-per-view, सारे जो main events हुए हैं, and you compare it to Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena for the welterweight title, the stakes couldn't be higher for any fight. This is the biggest fight of the year, easily, and the most competitive by far. You have Islam Makhachev जिसने अपनी lightweight title छोड़ के he's finally making the leap to welterweight. इतने टाइम से इस्लाम कह रहा है give me my second belt, give me my chance, I just need one chance और मैं double champion बन सकता हूँ. We are so close to that happening now. UFC 321 और 322 के announcements के बाद it's very obvious कि अब ये fight कभी भी announce हो सकती है. इस वीडियो में I want to talk about this matchup a little bit. I know थोड़ा सा दूर है and जब हम थोड़ा पास आएंगे I'll give my official prediction. So let's talk about this fight a little bit. पहली चीज़ पहली, Khabib Nurmagomedov, इस्लाम का मेंटर, दोस्त, भाई, ट्रेनिंग पार्टनर, कोच, जो भी बुला लो. He has always kept it real with Islam and with us the fans. जब भी इस्लाम किसी से लड़ता है, Khabib has always been very confident in Islam's abilities. Islam will dominate him. These guys aren't on Islam's level. You know, Oliveira fight के बाद, Volk fight के बाद, he's been very confident in Islam. And इस fight में भी कुछ different नहीं है. But recently I'm seeing Khabib talk about JDM unlike any of Islam's past opponents. Считаю, что Мадалена самый сложный соперник в Ислама карьере. Это мое мнение. Ни Чарльз, никто. Ни один из этих бойцов. И даже не Илья, если бы это бой был бы. Ну, мое личное мнение, во-первых, Мадалена 2 раза больше, чем Илья. Сопоставим. Илья. Вот. Он 2 раза больше. Он выше, больше, ноги помощнее, корпус, бокс не хуже. И грэпплинг он возится очень хорошо, если вы смотрели. Ну, для меня, если я например, буду готовить Ислама против Илья или Мадалены, для меня больше будет волновать и волнует Мадалена. इस fight के लिए Khabib has been going on every interview, every podcast, and एक चीज़ ही बोले जा रहा है. This is gonna be Islam Makhachev's toughest fight of his career. देखो, one thing that we do know is कि इस्लाम और खबीब के कैंप दे स्टडी द ओपोनेंट्स वेरी वेल, विच इज़ वाई हमने कंसिस्टेंटली इस्लाम के गेम में देखा है ही बीट्स पीपल एट देयर ओन गेम. डस्टिन को स्ट्राइकिंग में, ओलिवेरा को सबमिशन से, एंड इस्लाम की रीसेंट फुटेज वेर ही इज बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ मुआय थाई. इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस्लाम फिर से सबको सरप्राइज करना चाहता है विद हिज स्ट्राइकिंग. बहुत लोग बुला रहे हैं JDM को वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द UFC, एंड मैं डिसएग्री नहीं करता. आई थिंक JDM इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग इज राइट अप देयर विद इलिया. इतनी मतलब फ्लोई, इतनी स्मूथ बॉक्सिंग. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वीव सीन बॉक्सिंग लाइक दैट. इलिया की बॉक्सिंग इज वेरी स्टिफ, वेरी रिजिड, सॉर्ट ऑफ वेरी बॉक्सर टाइप बॉक्सिंग. लेकिन JDM की आई फील इज अ वेरी MMA, इन एंड आउट, हिट हिम विद द किक्स, टैग हिम, दैट सॉर्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल टू सी. बट या बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ इसकी बोथ Islam and Khabib have been giving respect to JDM like no other fighter before. They keep it very real and they always have. Ислам Макхачев против Мадалены. От тебя прозвучало о том, что это будет самый тяжелый бой в карьере Ислама. Почему? Ну, мы не можем сразу все карты раскрывать, потому что наши соперники тоже нас слушают. Но скажу так, что я давно слежу за Мадаленой. Он как боец очень интересный. Тогда, конечно, у меня даже в голове не было насчет боя Ислама и Мадалены, но судя по его скиллам, по его технике, по его ударке, судя по тому, как он защищается против борцов, а он дрался с борцами, ребятами, у кого длинные рычаги, тот же Холланд. Ну, то есть он дрался и с борцами, и с ударниками, и с физически крепкими ребятами. Он такой, знаешь, проверку прошел 9-0 UFC чемпион. У него та команда, которая готовила Волкановского на Ислама. Вот это все вместе, если сопоставить, я вижу в нем очень грозного соперника. But I think one of the main reasons that JDM is so dangerous to the Islam and Khabib camp is क्योंकि उसकी जो wrestling defense है. Gilbert Burns के against हमने देखा है, Kevin Holland के against, and obviously Belal Muhammad. JDM की wrestling defense है, he makes it look so easy, he makes it look so effortless. लेकिन there's actually a lot of technique behind that. And मेरे को लगता है कि उसकी जो पूरी all around game है, that's what makes him such a unique threat.
Islam Makhachev fought Dustin, जो फीट पे बहुत अच्छा था, ग्रैपलिंग सबको पता था. He fought Oliveira, जो ग्राउंड पे बहुत अच्छा था, स्ट्राइकिंग में was never really that great. The only other opponent जो I think इस्लाम को एक प्रॉपर टक्कर दे सकता था was Arman Sarukian. And unfortunately वो फाइट हुई नहीं. But this is the next best thing that we have. I think JDM के पास really वो potential है to shock a lot of people. And मेरे को पता है कि इस्लाम फैंस ऑलरेडी पागल हो चुके हैं, they're leaving their comments. लेकिन मैं किसी को रेज बेट नहीं कर रहा यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. आप देखते हो बिलाल मोहम्मद को, who has trained with Khabib इस्लाम many times. इस्लाम खुद 170 तक पहले नहीं गया क्योंकि बिलाल मोहम्मद चैम्पियन था. There's that respect, that training camaraderie between them. लेकिन अब बिलाल की शक्ल देखो, बिलाल और JDM के फाइट के बाद. And I think Bilal was a favorite in that fight. Look what happened to him. Is it fair to compare Belal Muhammad, जिसकी वो second title fight थी, to Islam Makhachev, who is on like a 15-14 fight win streak, most title defenses in lightweight history, pound for pound number one for like 700 days? Is it fair to compare the two? बिल्कुल नहीं. लेकिन these things do come across your mind जब आप ये फाइट देखते हो. मेरे ओपिनियन में आई थिंक बिलाल का जो गेम प्लान था was all over the place. The game plan would have obviously been कि उसको रेसल करो, नीचे रखो, tire him out and then mix it up. फिर देखो what he's about on the feet. But Bilal got a bit too caught up in the striking and he got tagged early on in that fight. फिर उसके बाद to get him down was very tough क्योंकि वो पहले गैस हो गया था and JDM की takedown defense was insane. JDM is going to be training with the Volkanovski camp and Volkanovski has fought Islam Makhachev twice. पहली जो fight थी was an absolute war. Yes, Islam वो जीता, but many people think it was like a 3-2, a very close fight. So the fact कि JDM has access to Volk, who has fought Islam twice, prepared for him twice, उसकी जो पूरी team है who's going to be working with him, have already prepared for a guy like Islam, gives JDM so many advantages. The favorite is obviously going to be Islam, which is insane क्योंकि he's moving up a weight class trying to become double champ. Very tough to predict this fight and मैं अभी obviously अपनी prediction नहीं देने वाला. अगर मेरे को off the top of my head किसी का नाम लेना था, I would obviously go with Islam, just क्योंकि उसका track record, उसका जो history है, he hasn't lost a fight in 10 years guys. ये जो दागिस्तानी लोग हैं ये और कुछ करते ही नहीं है, ये सिर्फ ट्रेन करते हैं. इस्लाम ने अभी एक recent Instagram post डाला था जहाँ वो ट्रेन कर रहा था. Let me just show that to you. Only those who train harder than us can defeat us. But it's impossible to train more than us. That's just badass, man. That's a real champion's mentality. And I honestly can't wait for this fight. I think JDM की जो boxing है, जो power है, जो size advantage उसके पास होगा, you know, this is the first time Islam Makhachev welterweight में लड़ेगा. All of those things are gonna make a massive difference. But if Islam does this, man, I would say he is right up there in the GOAT conversation. Islam के लिए if he beats JDM, there's only 2-3 fights left in his career. Ilya fight ले लो, Arman fight ले लो, and JDM fight ले लो. There's not many more challenges left. उसने हर चीज कर ली है. Everything that he could possibly dream of. And JDM के लिए same thing. It's historical, right? अगर आप Islam Makhachev को हराते हो, can you believe that? You just beat the greatest fighter of our generation. Not one of the greatest fighter of our generation who was only lost once 10 years ago. It's historical for both sides. I know it's too early to make an official prediction, but tell me who you guys would pick today. अगर fight कल हो रही होती, who do you think would win? Islam or JDM? Let me know in the comments.